सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे. सो लेट्स स्टार्ट अ फ्लटर एप्लीकेशन हैविंग सम नॉर्मल और वेरी बिगिनर लेवल डाउट्स कि हमें स्टेटफुल विजिट इस्तेमाल करना चाहिए या स्टेटलेस विजिट इस्तेमाल करना चाहिए. सो इट्स वेरी सिंपल कि हमें स्टेटलेस विजिट इस्तेमाल करनी चाहिए. वाई? बिकॉज स्टेटफुल विजिट्स लिटिल बिट हैवियर दैन स्टेटलेस विजिट. तो स्टेटलेस विजिट हमारा लाइट वेट होता है. हम अपनी एप्लीकेशन को जल्दी से रिलोड एंड जल्दी से उसको व्यू में लेके आ सकते हैं, सो दैट कि इट विल नॉट टेक लॉन्ग टाइम टू इन्फ्लेट एंड चेंज द वेरिएबल और क्रिएट अ UI. Okay, so for that we use these stateless widgets. Okay, so we will try to use stateless widgets everywhere. And how we can manage the state of stateless widget is by using some external libraries just like as Getx. So here I create an application like Getx application. As you can see here, the name of the application. So it's a very simple. It's just I have just created this application. There is nothing, just a main file, and I remove the extra codes from here, and then I have removed the home page from here. So let's start from very beginning. What is a Getx? So basically, a Getx is nothing more than a state management library. There is a three main pillars. Okay, remember, first state management, second is route management. Okay, that we have different routes. And what I mean by route is just nothing more than navigation from one screen to different screen. Okay, so what is one screen? Like we are in the home page, and on the click of button we want to switch to or navigate to the screen 2. Okay, so on that case we can use the Getx to handling the navigation. Okay, and the third main pillar is dependency management. So we can manage our dependency. Okay, so let's focus on the two important points here, which is the state management and the route management. Let's understand the first thing first, like how we can navigate from one screen to different screen. So for that we have to create two different screens. So for that I am creating a package, or we can say that simple, a directory having the name like view. In this directory we will contain or add or create all the view files. Okay, so here I create a simple dot file which is a view, which is a home screen, and then I have to create one more file for uh, home screen and the second screen. Okay, so in home screen what we will create a stateless widget. Okay, as I told you that key I will create only the stateless widget, and in that stateless widget I will use the Getx to manage the states. Okay, so let me show you that how I will create. And then okay, and I have to import the library of material.dart, same as it is here in the second screen, and give it a name. Yeah, so what is this? There is two different screens, home screen and second screen. So in home screen, let me create a scaffold. I hope you guys know about scaffold and all the widgets. Okay, scaffold, and then we have app bar, which is app bar having title, which is text, or give it home screen. Okay, now it's a home screen app bar, and then we have body. Inside that body we have center element, and inside that we have a child of column, or not, an elevated button. Why it's an elevated button? And in that elevated button on press we have function, and then we have child of text,
and in the text second, go to second. Okay. Okay, like what will happen on the click of on press? Okay, so we will navigate from one screen to different screen, and let me create the same thing here. With the change the app bar name to second screen. Okay, and go back to home screen. This is a button. Okay, so we have two screens. One is the home screen having the one elevated button, and then we have second screen which is having the second elevated button. Okay, so what we have to do, we have to navigate from one screen to different screen. So for that we are going to add the getx. Okay, so we are going to add getx of Flutter package library. Just copy this first thing and come in the Android Studio, pub spec yml, add in the dependency just below there, paste it, and pug get, and then let it be finished. Meanwhile we can come here and route these three pillars here, route management. Okay, so if you will see here, then we have how we can navigate from one screen to different screen is just simply use this getx. But before using this, we have to set up the getx in your application. So for that what we have is we just have to import the library, and then we go to the main screen and change this material app to get material app. Now you can use the getx all property in your application. Now just set a home screen here, home screen, nothing, save it, and it will go to the home screen and will come it here, and on the press of here, now everything is set up, there is nothing more than this. Then we just have to write a single line to just go to a different screen, so which is get dot to, and then second screen. Just close this, save it, and just come back in the second screen and right here on the press function, get dot back. That's it, nothing more. Save it. Let me open my emulator. Our application is now run. There is a home screen, as you can see here. Go to the second screen. If I will click on this button, then it should go to the second screen. Let me click. We are in the second screen. So it's very simple, bro. Okay, so if I will click on the go back to the home screen, then this function get that back will call, and if I will click, as you can see here, we are in on the home screen. So this is how we can navigate from one screen to different screen. Okay, if you have any doubt, just write in the comment section कि मेरे को यहाँ पे इशू आया, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई. Just let me know in the comment section. Just above this button, for that, so that if I will click on this button, then it should increase the, instead of going to the second screen, it should increase, or okay, change it. Let's create a one button more here and edit text here, so that if I will click on this button, first button here, यहाँ पे भी जो भी होगा, तो ऊपर जो count होगा, it should be increased like 1 2 3 4 5. एंड अगर मैं सेकंड स्क्रीन से जाके वापस आता हूँ, देन इट शुड बी द सेम स्टेट जो कि वो पहले था. दैट इज़ व्हाट वी कॉल स्टेट मैनेजमेंट. सो हाउ दिस कैन बी पॉसिबल, बिकॉज ये स्क्रीन तो चली गई ना, और अब कौन सी स्क्रीन सामने है, सेकंड स्क्रीन सामने है, तो इसका तो डेटा चले जाना चाहिए, ऑब्वियसली चले जाना चाहिए, राइट. बट इफ़ आई विल यूज़ द स्टेट मैनेजमेंट ऑफ विद द हेल्प ऑफ गेटएक्स, देन जो इसकी लाइफ साइकिल होती है एक एप्लीकेशंस की, देखो यहाँ पे दो चीज़ होती है. एक आपके पास होती है एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल, जब तक ये एप्लीकेशन रन कर रहा है, जैसे कि अभी मैं सेकंड स्क्रीन में आ गया, तो अब सेकंड स्क्रीन ये होगी हमारे पास एक एक्टिविटी और एक पेज.
तो इस स्क्रीन का जो एक लाइफ साइकिल होती है कि ये कब तक रहेगा मेमोरी में, ओके। और एक होती है एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल कि ये जब तक एप्लीकेशन ऑन है आपका तब तक वो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में रहेगा, विच इज़ ऑन द एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एंड एक होता है आपका जो कि ये स्क्रीन का होता है, तो दैट इज़ व्हाट स्क्रीन मीन्स एक्टिविटी कॉन्टेक्स्ट और स्क्रीन का लाइफ साइकिल। तो जो हम स्टेट मैनेजमेंट करते हैं वो हम एप्लीकेशन लेवल पे करते हैं कि जब तक हमारी एप्लीकेशन स्टे है इन दी कॉन्टेक्स्ट और जब तक वाइल हमारा यूज़र एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर रहा है वो डेटा रहेगा आपका। रिसेंट पे भी चला जाएगा ना आपके एप्लीकेशन, तो भी आपका जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है इज़ लाइव। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लाइव है, इसका मतलब कि आपको जो भी आपने कंट्रोलर, मैंने यहाँ पे एक नया वर्ड इस्तेमाल किया विच इज़ कंट्रोलर। तो कंट्रोलर ही एक ऐसा स्टेट मैनेजमेंट का मेन थिंग है जहाँ पे आप सारे डेटास को, और वी कैन से दैट कि जो परसिस्टेंट डेटा रखना है अपने को वहाँ पे वो सेव करके रखते हैं। हर एक स्क्रीन का अपना अपना एक कंट्रोलर होता है। लाइक जैसे कि आपका ये व्यू है, तो व्यू का काम ये नहीं है कि वो फंक्शनैलिटी डेटा के साथ उसको परसिस्ट रखे। व्यू का काम सिर्फ इतना है कि वो व्यू को दिखाने का काम करे। So for that we need a controller for controlling or managing or business logic. We need a separate file. So for that let's create a directory here with the name of controller, and inside this let's create a file. Oh shit, it's not should be directory, it should be a dot file with the name of home screen controller. Okay, now let's create a class home screen controller. Now it's simply a class, it's not a controller class, or it's not any other class, it's just simple class like आपका home screen और second screen जैसा एक simple class है। अब इसको एक मीन्स इसको एक स्पेशल क्लास बनाने के लिए सो दैट कि इसके अंदर जो डेटा है वो परसिस्ट हो रहा है और इरेज ना हो until unless आपके एप्लीकेशन विल नॉट गोज इन द विल शुड नॉट रिमूव फ्रॉम द रिसेंट ऐप, और आपके एप्लीकेशन प्रॉपरली किल ना हो जाए, तब तक ये आपका डेटा को परसिस्ट रखेगा इस क्लास के अंदर। सो फॉर दैट वी हैव टू एक्सटेंड अ गेट टेक्स्ट कंट्रोलर क्लास विच इज़ एक्सटेंड getx controller. Okay, now this class is not a normal class, it's a getx controller class. Okay, and this class will handle all the logic, all the business logic, will hold all the states of your home screen. Where is the home screen of your home screen? ओके, तो आपका जितना भी होम स्क्रीन है उसका जितना भी लॉजिक है, डेटा है, वेरिएबल्स है, वो सब कौन होल्ड करके रखेगा? ये आइडियली यही होना चाहिए। व्यू को नहीं पता होना चाहिए कि उसका डेटा कहाँ से आ रहा है। व्यू शुड इट जस्ट लाइक अ व्यू, एवरी व्यू हैव देयर ओन कंट्रोलर फॉर देयर ओन बिजनेस लॉजिक एंड फॉर समथिंग, ओके, वेरिएबल्स। समझ गए ना यार, बस यही चाहिए। Now come in this point, let's create a view here, let's create a column because हमें अब ऐसा कुछ चाहिए line by line. So for that we have to create a column, I think so. Okay, column. Okay, now in the column we have the children's, and here we have children's, then which is a center children, not in center. First of all elevated button, then we need elevated button, go to the second screen, then we need one more button for count, increase the count, change this name of the button, add click count, and this functionality should be not there. Okay, and then we should need a text view. Here we should click count is boom. अब यहाँ पे एक हम वेरिएबल डालेंगे जो कि चेंज होगा एज वी क्लिक ऑन दिस बटन। ओके,
let me save this view, and then you can see that we have go to the second screen. We'll go to the second screen and come back on the home screen, and if I will click on this button, nothing is happening because there is nothing logic in the on press button. There's no any logic. Okay, so for that what we can do, so you guys know that this is a stateless widget. If once it will created the UI, then it will not refresh their UI. Okay, सो फॉर दैट गेटेक्स हमें बोलता है कि हमारे पास कंट्रोलर है जहाँ पे डेटा तो हम रख सकते हैं, बट व्यू को कैसे बोलेगा कि आप दोबारा से यहाँ पे वेरिएबल चेंज हुआ, अब इसकी वैल्यू को भी चेंज कर दो, बिकॉज ये तो स्टेटलेस विजिट है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? तो उसके लिए हमारे पास दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे पहले वेरिएबल में डालता हूँ विच इज़ वेर ऐसे क्लिक काउंट which is 0. okay, click count यहाँ पे भी 0 है, and let me create a variable of controller class here where controller equals to में get dot put, and here we have to add means write the name of your controller class which is home screen controller. That's it. अब हमारे पास कंट्रोलर क्लास का ऑब्जेक्ट मिल चुका है. नाउ वी विल हेयर जस्ट राइट द कंट्रोलर क्लास वेरिएबल सो विच इज़ डॉलर एंड देन कंट्रोलर डॉट क्लिक काउंट. ओके, तो यहाँ पे अब मेरे पास मैं सेव करूँगा तो देखना यहाँ पे 0 आ गया, बट ऑन प्रेस पे अब मुझे ये कंट्रोलर डॉट क्लिक काउंट डॉट प्लस इक्वल्स टू बाई 1, जितनी बार भी वो प्लस करे वो क्या हो जाए, उसका काउंट बढ़ जाए. इफ़ आई विल आई हैव ऑलरेडी सेव दिस वन एज यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे अभी रिफ्रेश हुआ था ये, एंड इफ़ आई विल क्लिक ऑन दिस वन नथिंग विल हैपन. यू नो व्हाई? बिकॉज दिस इज स्टेटलेस विजिट. once it will be created then it will not recreate their child. So for that what we can do, we have to add this obs at the end of the our variable. Now this variable is not a simple integer or a simple variable, it now be a this variable is now a observable. it means कि अब ये जो वेरिएबल है ये ऑब्जर्वेबल है. अब इसका जो भी इस वेरिएबल में जो भी चेंज होगा, तो जहाँ जहाँ ये वेरिएबल यूज़ किया गया वहाँ वहाँ ये उस व्यू को दोबारा से रिक्रिएट करेगा. तो मतलब कि अब इस स्पेशल इस वेरिएबल के लिए ये आपका कंट्रोलर इसको देख रहा है फोकस करके कि भाई इसकी वैल्यू चेंज तो नहीं हुई. अगर चेंज हुई तो जहाँ जहाँ ये यूज़ हुआ है वहाँ वहाँ पे उसको रिक्रिएट कर दो उस व्यू को. बट देर इज़ अ वन केस, उसने बोला एक शर्त है कि बिफोर रिक्रिएटिंग दैट यू हैव टू रैप दैट थिंग इनसाइड द OBX. इनसाइड द OBX. तो व्हाट इज़ OBX? OBX कहता है कि जो भी ऑब्जर्वेबल वैल्यू में चेंजेस हुआ है ना, एग्जीक्यूट हुआ है, जो ऑब्जर्वेबल वैल्यू जो चेंज जो हुआ है चेंज, उसको एग्जीक्यूट करवाओ इस OBX विजिट के अंदर. तो आप जो भी OBX विजिट लिखोगे ना, उस विजिट के अंदर जो भी लिखोगे और उसके अंदर जो भी वेरिएबल लिखोगे, उस व्यू के अंदर जो भी वेरिएबल आप दे रहे हो, तो अगर वो वेरिएबल फ्यूचर में कभी भी चेंज होता है तो ये OBX ऑटोमेटिकली उसको रिक्रिएट कर देगा उस चाइल्ड को. ओके, तो मतलब कि इनडायरेक्टली देखो स्टेटलेस विजिट रिक्रिएट नहीं हो रहा है, बट उसने उसके अंदर क्या एक ऐसा विजिट इस्तेमाल कर लिया जो विजिट क्रिएट होता है और दोबारा से रिबिल्ड होता है, वाइल जब उसके अंदर यूज होने वाला वेरिएबल ऑब्जर्वेबल हो और वो उसकी वैल्यू चेंज हुई हो. इफ़ आई विल सेव दिस ना, टाइप इंट इज़ नॉट ओके. वाई? व्हाट इज़ द इशू? लाइक वी आर changing the click count which is not an int, which is an observable value. So for that we have to type the value because उसकी जो वैल्यू है वो है इंटीजर टाइप की. क्लिक काउंट इज एज आई टोल्ड यू ना कि अब ये जो वेरिएबल है इज़ नॉट अ सिंपल इंटीजर और टाइप ऑफ वैल्यू, इंटीजर टाइप और स्ट्रिंग टाइप ऑफ वैल्यू. इट्स नाउ अ ऑब्जर्वेबल वैल्यू जिसकी अंदर जो वैल्यू है ना वो है 0. तो इस क्लिक काउंट का जो वैल्यू है उसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हमें क्लिक काउंट की वैल्यू दिखानी है. सेव इट.
Subtype, okay, sometimes it's happen in the, oh shit, you values, save it. What happened here? Okay, let's rerun the application. या देखो अभी ये हट गया. समटाइम वो कभी कभार होता है, हमारे साथ गेम खेलता है फ्लटर. तो इफ़ आई विल क्लिक ऑन दिस शुड चेंज. देख रहे हो आप कैसे चेंज है? 1 2 3 4 5 6. अब मैंने आपको बोला था कि अगर मैं सेकंड स्क्रीन में चल जाऊँगा तो भी इसका डेटा चेंज नहीं होगा. देख लेना, नहीं होगा, मेरी जुबानी है, नहीं हुआ ना. तो दिस इज़ हाउ द गेटेक्स का स्टेट मैनेजमेंट वर्क. तो मेन थिंग यहाँ पे यही आती है मिला जुला के कि आपको ऑब्जर्वेबल और OBX पे ध्यान देना है. और जिस भी विजिट के अंदर जो भी वेरिएबल, अब देखो इससे ये मैटर नहीं करता कि ये जो वेरिएबल है इस OBX के अंदर ही चेंज होगा. देखो मैंने इसको बाहर से चेंज किया है, इवन देन ये उसको ऑब्जर्व कर रहा है और इस OBX के अंदर बने हुए चाइल्ड को रिक्रिएट करके यहाँ पे इसकी वेरिएबल को चेंज कर दे रहा है. दिस इज़ हाउ दी OBX वर्क्स. ओके, सिंपल. सो आज के लिए फिर इतना ही. अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नॉलेजेबल लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. बिकॉज़ यार मैंने आपके लिए इतनी बड़ी वीडियो बनाई है. आप भी अपना 3 सेकंड निकालिए लाइक के लिए, सब्सक्राइब के लिए एंड प्रेस द बेल आइकन के लिए. थैंक यू. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. एंड मेरे को कमेंट करके मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है, किस फ्लटर का कॉन्सेप्ट है जो आपको परेशान कर रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा. आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट.